Good morning all. In this video we are going to see unification in AI. So why we require unification in AI, that we understand first. As we know that the knowledge base of AI consists of English sentences which are represented in logical formats, right? So we saw this how we convert the sentences into logical formats in previous sections. So in this section we will see if a certain situation occurs and we need to generate the output for that particular situation. So we need to identify that how we can convert, how we identify two sentences are identical in this case, right? So here we required unification. Using unification we can represent, or we can say that two sentences are identical. ठीक है. So for this purpose we require the unification. So as we say two sentences are identical, for proving this we require unification. So we take two literals as the input, means two sentences as input, and makes them identical using substitution. ठीक है. सो यहाँ पे दो सेंटेंसेस रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कंसीडर किया साई 1 एंड साई 2. We apply unification as unify psi1 psi2. For example, if we consider find the MGU for unify king of X and king of John. MGU stand for most general unification we need to find out. So these are the two different sentences we can consider. First, that is king of X, and second, that is king of John. So we need to say that these two sentences are identical, right? So how we can say these two sentences are identical? Using substitution method. But for substitution method also we require, what is the first purpose that we require, that is both the sentences consist of same predicate. So what is the predicate? First of all, predicate is nothing but king of, father of, brother of. This we consider as a predicate. So here we can consider king of, right? So both the predicates are same, right? So that's why we can apply the unification algorithm and it will be a successful one, right? So in this case what we need to substitute, यहाँ पे दोनों इसमें एक ही आर्गुमेंट है, तो व्हाट वी डू, वी कैन सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ एक्स एस जॉन. In place of x we can substitute John. So how this substitution will be done? That is substitution theta is equals to, in place of x we are putting John, right? So it is a unifier. So this is for the unification algorithm. What is unifier? Substitution is the unifier. So this is the unifier for these items, and applying the substitution in both the expression will be identical. Clear? Now if you consider the second example, in this we can say p of x comma y and p of a comma f of z. And in both of these sentences p of means predicate is same, or function name is same, right? And number of argument presents are also same. So how we convert these two sentences are identical? That is by substitution. So what we are substituting? That is, in place of x we are replacing with x, and y we are replacing with f of z. So how we represent it? That is, in place of x put a, in place of y put f of z, right? So this is what the output or result of this unification algorithm, which we called it as a unifier. So as we say, there are certain conditions for unification that we already discussed, like predicate symbol must be same, items or expression with different predicate symbols can never be unified, number of arguments in both expression must be identical. अगर same number of arguments होंगे तो ही हम unification successful होगा. Unification will fail if there are two similar variables present in the same expression. अगर एक ही expression में दोनों भी variable same है, then also unification gets failed. How? We'll see using example. So
here this is the unification algorithm. How it works, that is we are considering two variables, that is psi1 and psi2 or constant. then अगर ये दोनों भी सेंटेंसेस वी कैन कंसीडर एज कि आइडेंटिकल है पहले से ही, तो ये अल्गोरिदम फेल्यूर ही देगा. नाउ इफ़ यू कंसीडर psi1 वेरिएबल, बट ये psi1 वेरिएबल psi2 के वेरिएबल्स एंड psi1 के वेरिएबल्स अगर सेम है तो भी ये फेल्यूर देगा. अगर इस सेम नहीं है तो ये क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन करेगा, राइट. सो दिस इज़ हाउ द सब्सटीट्यूशन ऑकर. सेम फॉर psi2 वेरिएबल, राइट. अगर psi2 के कंटेंट psi1 में प्रेजेंट है तो इट विल गेट अ फेल्यूर, अदरवाइज वी आर रिप्लेसिंग psi2 विथ psi1, राइट. नाउ सेम हियर सेकेंड स्टेप में दिया है, देखो, इफ द आइडेंटिकल प्रेडिकेट सिंबल, if the identical predicate symbol in psi1 psi2 are not same, then it will नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो भी है और प्रेडिकेट सिंबल अगर सेम नहीं है तो क्या होगा, फेल्यूर होगा. अगर दोनों इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है तो भी ये फेल्यूर होगा. क्लियर. सो दिज आर वेरियस कंडीशंस. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, जो भी सब्सटीट्यूशन सेट है वो हमें क्या डिफ़ाइन करना होगा, नल डिफ़ाइन करना होगा. और उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए फॉर ऑल द जो भी एलिमेंट्स है psi1 एंड psi2 के, उसके लिए वो अल्गोरिदम कॉल करना होगा. एंड वी आर नीड टू अपेंड दिस सब्सटीट्यूशन इन सब्सटीट्यूशन सेट, एंड वी आर रिटर्निंग this substitution set as the unifier algorithm. Clear. So this is how it will be explained using the unification algorithm. Now we'll see how it works for different how it will get filled for different arguments or different predicate symbol, that we can see over here. So here we are here what is the question, find the MGU of these two sentences, atomic sentences, right. So MGU, most general unification, right. So we need to apply unification algorithm, that is substitution method. So here you can consider predicate symbol is same, but number of arguments are also same. But if you consider the second sentence, that is p of x comma x, here we can see that both the arguments are same. So as in the condition we saw, अगर दोनों आर्ग्यूमेंट सेम है तो यूनिफिकेशन हमें क्या देगा, फेलियर ही देगा. हाउ, दैट इज़ वी कैन सी ओवर हियर. सो वी आर सब्सटीट्यूटिंग x के जगह पे हम लोगों ने अगर f ऑफ a सब्सटीट्यूट किया तो ये दोनों जगह पे क्या चला जाएगा, f ऑफ a. सो इन दिस केस ये दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल हो गए क्या, सेम हो गए क्या, नहीं हो गए. दैट्स वाई इट विल गिव अस एन फेलियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो 3 आर्ग्यूमेंट्स है, राइट. नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम. देन व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट, राइट. तो 3 टाइम सब्सटीट्यूशन आएगा. जैसे पहले b एंड z के बीच में सब्सटीट्यूशन देखेंगे, देन x एंड f ऑफ y के जगह पे, देन f ऑफ g ऑफ z एंड f ऑफ y के जगह पे. सो इसी हियर फर्स्ट z को b से सब्सटीट्यूट किया हमने, देन x को f ऑफ y से सब्सटीट्यूट किया एंड y को g ऑफ b से सब्सटीट्यूट किया. सो इन दिस केस it will give us an unification successful, and these are the unifiers as the result of this unification algorithm. That's all about unification. If you like this video, please subscribe my channel for more updates on next topics of AI, and please like my channel. Thank you.